So we are here to discuss something regarding the disease of RBCs, and the most important disease of RBC is basically the anemia. That is either reduction in the number of our total number of RBCs or the hemoglobin, which is contained in it. I think I need to mute all them, please. So anemia को हमने basically 3 categories में classify किया था: anemias of diminished erythropoiesis, hemolytic anemias, and the blood loss anemia. Blood loss anemia हमने उस दिन थोड़ा सा discuss कर लिया थे. आज हम बात करेंगे anemia of diminished erythropoiesis की. Anemia of diminished erythropoiesis की most important cause जो है वो तो उन components की deficiency which are required for the synthesis of hemoglobin, like iron, like vitamin B12, like proteins, and so many things. So beside this, hello. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर अब आवाज आ रही है. ओके ओके डन, ठीक है. वालेकुम सलाम. चलो सही है, आवाज आ रही है. तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं ताकि आप लोगों की आवाज मुझे ना आए. वैसे भी सिर्फ मुझे ही बोलना चाहिए, तुम लोगों को नहीं सर बोलना कर दे चाहिए. म्यूट. क्लास में सिर्फ सर मुझे कर बोलना दे म्यूट. चाहिए. हाँ, तुम लोगों को नहीं बोलना चाहिए. ये सर कर दे म्यूट. ओके सर. ये होगा यहाँ से म्यूट ऑल. लेकिन क्या इसमें मैं तो म्यूट नहीं हो गया ना? मेरा तो चल रहा है अभी म्यूट, है ना? मतलब अनम्यूटेड हूँ मैं. ऑल राइट, गुड फॉर मी. But now we are having an unstable internet connection. Okay, the problem is resolved, I think. So we will continue. तो हम बात कर रहे थे anemia और diminished erythropoiesis की, यानी RBCs के synthesis within the bone marrow is affected, is diminished. This may be due to the nutritional deficiency, यानी the raw material which is required for the synthesis of hemoglobin or RBC is deficient, or it may be secondary to renal failure or some other chronic inflammation
that may be affected by the production, less production of erythropoietin and some chronic inflammatory procedures. So what now? I'm sorry, I'm not well versed with this whole process. So ये क्या मैसेज का आया है चैट में? कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है या ऐसे ही है? नहीं शो हो रहा है मेरे पास ये चैट का मैसेज. तो आई विल कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो. वैसे भी तुम लोग कौन सा सुनते हो ना. एनीवेज तो तीसरा जो कैटेगरी हमारे पास थी वो ये है कि बोन मैरो फेलियर हो जाए. बोन मैरो फेलियर ऑब्वियसली अगर बोन मैरो फेलियर होता है एप्लेजिया बोन मैरो का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि लैक ऑफ फंक्शनिंग बोन मैरो जो इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व है रेड बोन मैरो वो कम हो जाए. So then obviously it will be associated with diminished erythropoiesis. Beside aplastic anemia, we are having primary hematopoietic neoplasms like bone marrow का कोई ट्यूमर है, प्राइमरी ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द बोन मैरो, तो वो हेमाटोपोइसिस जो है उनको कम कर देगा और बाकी जो सेल्स हैं नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो ज़्यादा हो जाएगी. सिमिलरली if we may have some infiltrative disorders in the bone marrow. Infiltrative disorders means कि बाहर कोई और डिजीज है उसने सेकेंडरीली बोन मैरो को इन्वॉल्व कर लिया. लाइक इन सम केसेस ऑफ द मेटास्टेटिक कैंसर्स के बोन मैरो में ट्यूमर, you know, bone is a very frequent site for metastasis. तो लाइक प्रोस्टेट का कैंसर है वो बोन मैरो में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है तो ऑब्वियसली फिर वो प्रोस्टेट का कैंसर ही ग्रो करना शुरू कर देगा. हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन या स्टॉप हो जाएगा या कम हो जाएगा. सिमिलरली डिसेमिनेटेड ग्रैन्युलोमेटस डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस या सार्कोइडोसिस, सिस्टमिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज जो अगर वो बोन मैरो के प्रोसेस को इन्वॉल्व कर लेती है तो देन बोन मैरो जो है वो इटसेल्फ आ जाएगा क्या कहते हैं फेलियर में, एंड दैट मे लीड टू डिमिनिश एनीमियाज ड्यू टू डिमिनिश एरिथ्रोपोइसिस. ये ठीक है कि इन कंडीशंस में जो प्राइमरी डिजीज है वो कुछ और है, सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होगी और एनीमिया जो है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन होगी. इट विल नॉट बी अ डिजीज एट इट ओन बट इट विल बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम अदर डिजीज प्रोसेस. सो डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन को हम बेसिकली अगर आप इफ यू कैन सी तो हम इसको ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं लाइक इनहेरिटेड जेनेटिक डेफिशिएंसीज, diseases leading to stem cell depletion या disease affecting erythroblast maturation, thalassemia में या Fanconi's anemias में ये इस तरह की सिचुएशन आ जाती है. या nutritional deficiency anemia like anemia of due to vitamin B12 deficiency या iron deficiency anemia, या like हमारे पास जो है एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी है रीनल फेलियर में या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में रीनल फेलियर कम हो जाएगा, एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा तो दैट वुड बी एसोसिएटेड विद एनीमिया ऑफ डिमिनिश्ड एरिथ्रोपोइसिस. इम्यून मेडिएटेड इंजरी ऑफ प्रोजेनिटर्स लाइक इन केसेस ऑफ प्लास्टिक एनीमिया या प्योर रेड सेल एप्लेजिया हो जाए. इन्फ्लेमेशन मेडिएटेड आयरन सिक्वेस्ट्रेशन as may happen in some cases of anemias which we see in chronic diseases. Primary hematopoietic anemias, space occupying lesion, infection of the red cells, unknown mechanisms. Beside these, we have nowadays a very important category which is called as bone marrow aplasia secondary to chemotherapeutic agent in administration. You know, chemotherapy जब देते हैं तो वो mainly जितने भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है. तो उसमें भी फिर ये कि आपको बोन मैरो एप्लेजिया मिल जाएगा एंड दैट may lead to anemia of diminished erythropoiesis. Right now we will be talking about the megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia is the ineffective erythropoiesis secondary to impairment of DNA synthesis. Simply megaloblastic anemia means DNA synthesis is impaired and resulting in ineffective erythropoiesis. And this is usually characterized by the production of abnormally large erythroid precursor cells and red cells. And the RBCs are usually larger than normal size. Commonly, they are called as macrocytes, and they usually do not have an area of central pillar, which is very much characteristic of the RBCs. So morphologically, it becomes very evident, and it is characterized by the presence of the large cells. So we call it macrocytic anemia as well.
we had a temporary sort of this disconnection, signals का कुछ problem था. Anyways, we will coming back to this situation. And to tell you more about this megaloblastic anemia, two important frequent causes are for pernicious anemia, which is due to B12, vitamin B12 deficiency anemia. A special type of anemia, pernicious anemia, is characterized by the megaloblastic anemia or macrocytic RBCs. And folate deficiency anemia. Folic acid is also required, and this folate deficiency anemia is also becomes more important. So, what as far as the pathogenesis of these anemias, megaloblastic anemia is concerned, vitamin B12 and folic acid, they are basically the coenzymes that are required for the synthesis of thymidine bases, जो purine pyrimidine bases में. So, when the formation and synthesis of these basis is compromised, this usually results in defective RBC production, and these defective RBC production in turn, they induce the macrocytic anemia or the megaloblastic anemia. This deficiency, it may be either relative or maybe absolute. Absolute means that it is not primarily present in the body or is deficient in the diet or has some abnormality in this absorption or transportation of these material, but also it may be relative. Relative means that the amount which is required for the synthesis of RBCs, especially if the demand of the RBC is high and the requirements cannot be met, although there is no such deficiency of, not absolute deficiency of these either vitamin B12 or vitamin or folic acid, but the relative deficiency may be there. So deficiency may be either relative or maybe absolute. It usually results in defective nuclear maturation due to deranged or inadequate DNA synthesis. रिजल्ट क्या निकलता है इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सेल डिवीजन में कुछ ब्लॉक या डिले हो जाता है. दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद मैच्योरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म बट नॉट द मैच्योरेशन ऑफ द न्यूक्लियस. सो इन एक प्रीमैच्योर इमैच्योर सा न्यूक्लियस निकलता है एंड द साइटोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट सिंथेसाइज्ड. तो इसलिए हमें इसके रिजल्ट में मैक्रोसाइट्स मिलते हैं. Some important causes of megaloblastic anemia listed in this slide. इसको हम चाहें तो सेग्रीगेट कर लें अपने लेवल पे कि B12 की डेफिशिएंसी अलग होगी और फोलेट की डेफिशिएंसी जो है वो अलग होगी. Like B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, maybe it may be decrease intake like in strict vegetarians, yeah, inadequate diet. It may be having some impairment in the absorption process. Intrinsic factors is required for the proper absorption of vitamin B12 from the intestine. I'll discuss the metabolism of this vitamin B12 shortly, inshallah. So either it may be due to this deficiency of intrinsic factor, or the patient is generally having the malabsorption states like Crohn's disease, celiac disease, A beta lipoproteinemia, or some other malabsorption causes, or due to some disease of the intestine, if the ileal resection has been done in the patient, or due to overgrowth of the bacteria. So these may be the causes of impaired absorption of vitamin B12. Either it is not present or it is impairedly absorbed and transported to the site of hematopoiesis. Similarly, as far as folate deficiency is concerned, it may be due to decreased intake, like it is not present in the diet, or alcoholism, or in the infancy, when the deficiency of folate is usually associated with these conditions. Similarly, it may be having impaired absorption, like the same causes जो vitamin B12 की deficiency cause कर रही होती है besides intrinsic factor deficiency. तो इसमें आपको जो है वो मिल सकती है ये impaired absorption. There may be increased lysis, like in cases of the patient who are having hemodialysis. Patients are very much subjected or liable to having this loss of folate deficiency, and they may be presenting with this folate deficiency anemia. It may be relative deficiency. Relative deficiency जो आपको बता रहा था वो यहाँ पे आती है कि if there is increased requirement, like in cases of pregnancy or infancy or cancer patient, when there is
the dietary intake or requirement of the folate, it becomes increased more than the normal, and the body is not able to provide the patient with these increasing amount of the folate, folic acid or folate. So whether there is relative deficiency or absolute deficiency, it may lead to an anemia. You can see in this slide, we have shown the, how the B12, which is usually present in the diet, is B, है ना? और फिर हम स्क्रीन शेयर करते हैं और दोबारा वहीं पे चलते हैं. सो कुछ नेट के इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे ख्याल में चलते रहेंगे. होपफुली शाम की जो क्लास होगी उसमें ये इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे. So this slide, it shows some important mechanism regarding vitamin B12 intake, absorption, and the factors that may be associated with deficiency of vitamin B12. So vitamin B12 is not free. It is present in our diet, usually binding to some proteins, and it is ingested with the help of salivary fluid. This protein, this this heptocorrin is released from the salivary gland. It is present in the saliva. It binds with this and it goes within the stomach. Within the stomach, this protein is digested. So the vitamin B12 molecule is left alone. As soon as it is left alone, it binds with the heptocorrin, which is released from the saliva, and the intrinsic factor, which is released. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये हेप्टोकोरिन से बाइंड कर जाता है विटामिन B12. हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वंस इट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट बाइंड्स विद द इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करने के बाद ये जो है ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द enterocytes, epithelial cells of the small intestine. वहाँ पे ये फैक्टर बाइंड होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर ये ब्लड में जाता है. ब्लड में जाके ये इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द इंट्रिंसिक फैक्टर. अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, या सलाइवा में हेप्टोकोरिन की डेफिशिएंसी हो, या कुछ पैंक्रियाटिक अमाइलेज की डेफिशिएंसी हो, लाइपेसिस की, या विटामिन B12 डाइट में ही कम हो, तो फिर ये सारे फैक्टर्स जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं कि विटामिन B12 की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, या एब्जॉर्प्शन डाइट में कम है, या एब्जॉर्प्शन कम है. तो ये ऑल दीज कंडीशंस में लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ द vitamin B12 in the blood, and ultimately leading to megaloblastic anemia. कॉमन फीचर ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, बहुत आसान सी बात है कि क्योंकि हमें डायग्नोसिस जितने भी एनीमियास की बनानी है वो बेसिकली पेरिफेरल ब्लड फिल्म और बोन मैरो के ऊपर ही बनानी है. तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है वो है क्या है कि मैक्रोसाइट्स नज़र आते हैं, ओवल आरबीसीज की नॉर्मल शेप जो है वो बाइकनकेव डिस्क है, बट इन दिस केस वी विल हैव दीज ओवल आरबीसीज एंड मैक्रोसाइट्स कैसे होता है, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड के होते कैसे हैं ये. Plus, we may have some variation in the size of the RBCs, amongst the shape of the RBCs. We may see some nucleated RBCs on the peripheral film as well, like the condition is termed as anisocytosis, poikilocytosis, and with the presence of plus minus nucleated RBCs. The process of maturation of nucleus is not only affected for the sake of RBCs, but it also affecting the WBCs as well. So we will have some large and hypersegmented neutrophil, and this is a very important characteristic feature of the megaloblastic anemia.
If we see the bone marrow, sorry, if we see the bone marrow, the bone marrow would be hypercellular. Hypercellular means कि it will be more cellular as compared to the normal. Normally इसमें आपको fat vacuoles भी मिल जाते हैं, but in this case, in every type of severe anemia, there will be hypercellular bone marrow with some megaloblastic changes in the RBCs. I'll show you कैसे megaloblastic changes होती हैं, and we may have giant metamyelocytes and band forms of the neutrophil as well. So if we see, this is the peripheral film of the blood, which is showing macrocytic anemia. Here you can see the size of the RBCs. If we compare it with the lymphocyte, so ये कुछ normal से लग भी रहा है, with the central area of central pillar कुछ size कम है as compared to the lymphocyte, but majority of the cells अगर आप देखें तो ये these cells are larger in size, oval in shape, lack area of central pillar. These cells are called as macrocyte, and when these large number of macrocytes are present in the blood, so we call it as a macrocytic anemia. Beside these macrocytic anemia, we may see कि RBCs के size में बड़ी variation है, anisocytosis है, कुछ shapes में भी abnormalities हैं, poikilocytosis है, and last but not least, if we focus on this neutrophil, तो न्यूट्रोफिल को अगर आप देखें तो इसके न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा सेगमेंटेड हो गया है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, जो यूजुअली 3 4 5 लोब्स ही होते हैं, यहाँ पे ज्यादा हाइपर सेगमेंटेड, बहुत ज्यादा सेगमेंट बनना शुरू हो गए. सो टिपिकली the blood picture of macrocytic anemia, it is labeled as macrocytes, anisocytosis, hypersegmented neutrophil. They are usually found in the peripheral blood smear of megaloblastic anemia. यहाँ पे आप ये तो कह सकते हैं कि मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, बट ऑब्वियसली द कॉज कैन नॉट बी असर्टेन्ड कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फोलेट की डेफिशिएंसी है, और अगर डेफिशिएंसी है तो रिलेटिव डेफिशिएंसी है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, या ये डाइट में ही कम है. दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड. If we look at the bone marrow, this is the bone marrow. You can see ये जितने भी इस तरह के सेल्स आ रहे हैं जिनका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ग्रैन्युलर और ब्लूइश कलर का है, ये सारे सेल्स जो है वो बेसिकली अगर आप देखें तो ये माइलोसाइट सीरीज के हैं. आई मीन माइलोसाइट से मेरा मतलब है कि ये सेल्स जो हैं ये WBC के प्रोजेनेटेड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स के प्रोजेनेटेड सेल्स हैं. एक शायद आपको यहाँ लिम्फोब्लास्ट भी बड़ा सा नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे ये इस तरह के RBCs नजर आ रहे हैं जो मेगालोब्लास्टिक चेंज के साथ आ रहे हैं ना. मेगालोब्लास्टिक चेंज यानी इनके RBCs जो है वो सेंट्रल पिलर कम है इसमें. और अच्छा, पूरा ओवरऑल आप देखें तो RBCs पूरा जो बोन मैरो है वो हाइपर सेलुलर है, फैट वैक्यूल कम नजर आ रहे हैं. कुछ माइलोसाइट के सीरीज के सेल जो है वो इमेच्योर से नजर आ रहे हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था. और कुछ ये जो बैंड फॉर्म है या सेगमेंट फॉर्म है न्यूट्रोफिल्स की, कुछ ये भी ज्यादा विजिबल है. यानी ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ WBCs को, RBCs को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये WBCs को भी इफेक्ट करता है. तो डायग्नोसिस मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के या मैक्रोसाइटिक एनीमिया की बेसिकली हमारी बनती है पेरिफेरल ब्लड फिल्म की बेसिस पे. प्लस ये कि लेटर ऑन इसमें हम और चीज़ें ऐड करके लाइक बोन मैरो पिक्चर या और दूसरी चीज़ें ऐड करके उसकी कॉज पे हम असरटेन कर सकते हैं. प्लीज प्लीज काइंडली म्यूट 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 नहीं, म्यूट करें म्यूट करें म्यूट करें, सबको म्यूट करें प्लीज जी. जी सो मतलब हिस्ट्री से हमें पेशेंट को लगेगा एनीमिया है, उसकी हम CBC करवाएंगे. CBC में हमें मिल जाएगा कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो ये इंडिकेट कर होंगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैक्रोसाइटिक एनीमिया. वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? वो होंगे MCV, मीन कॉर्पसकुलर वॉल्यूम, वो बढ़ा हुआ होगा. MCH, MCHC प्रोबेबली प्लस माइनस है कि वो बढ़े हुए हों या नॉर्मल हो, या हो सकता है कि कभी कभी कुछ कम भी हो, लेकिन ओवरऑल जो है वो मतलब उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस कंडीशन में वो हमारा होगा MCV, मीन कॉर्पसकुलर वॉल्यूम. और वो मीन कॉर्पसकुलर वॉल्यूम यूजुअली बड़ा होगा. नॉर्मल वैल्यूज उसकी 86 टू 90, 82, 81, 82 टू 96 फेंटोलीटर होती हैं. इस कंडीशन में 100 प्लस तक भी आपको 100 प्लस वेंटोलीटर तक भी RBC का साइज जो है मीन कॉर्पसकुलर वॉल्यूम जो है वो मिल जाता है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है. और फिर उसको हम अगर यहाँ पे देखें ब्लड पिक्चर में, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मैक्रोसाइट्स, एनाइसोसाइटोसिस प्लस हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. दिस इज वेरी मच डायग्नोस्टिक ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस करने के बाद अगला स्टेज ये होता है कि ये है किस तरह का. विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या फोलेट डेफिशिएंसी है. तो उसको आइडियली किससे करना चाहिए? आइडियली मतलब आइडियली इसको डायग्नोस करने के लिए विटामिन B12 या फोलिक एसिड के
सीरम लेवल्स कराने चाहिए, तो वो उससे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि ये किस तरह का हमारा ये हो सकता है, किस वजह से हो सकता है ये एनीमिया. Vitamin B12 deficiency anemia is one of the causes of vitamin B12 deficiency anemia is pernicious anemia, which is caused by autoimmune gastritis and failure of the intrinsic factor. एक inflammation है stomach की, which is autoimmune in origin, autoimmune gastritis कहते हैं, chronic gastritis है. इसमें क्या होता है कि intrinsic factors की deficiency हो जाती है. जब intrinsic factor की deficiency होगी तो that leads to improper absorption of the vitamin B12 from the enterocytes, और उस improper absorption की वजह से there will be maybe ये डाइट में विटामिन B12 नॉर्मल हो, बट विद इन दी ब्लड इसके सीरम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, एंड दैट इज सेकेंडरी टू ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस. सो आइडिया इसके गैस्ट्राइटिस को आपने ट्रीट करना है बेसिकली. अगर गैस्ट्राइटिस ट्रीट हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा. विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर इसमें सिर्फ अगर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में मिले तो उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया. अगर किसी और वजह से मिल रही है तो वो तो मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया ही इंड्यूस करेगी. So autoimmune या chronic atrophic gastritis is associated with antibodies against the parietal cells. दो टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, सॉरी 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. टाइप 1 एंटीबॉडीज दे ब्लॉक binding of the B12 and intrinsic factor. You know, intrinsic factor of B12 की binding is very much important, क्योंकि अगर binding नहीं होगी तो ये enterocyte से इनकी absorption नहीं हो पाएगी. जब absorption नहीं होगी तो फिर there will be deficiency of B12. B12 is no more available within the bone marrow कि वो न्यूक्लियस को मैच्योर कर सके. Type 2 antibodies, they prevent binding of B12 intrinsic factor complex with ileal receptor. In type 3, directed against proton pump of the gastric parietal से तो वहाँ से intrinsic factor की deficiency हो जाएगी. तो या तो intrinsic factor की deficiency हो, number 1, या उनकी कोई ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो B12 और intrinsic factor की बाइंडिंग को इनहिबिट कर रही हो, या इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 की बाइंडिंग तो हो जाए लेकिन वो इलियल रिसेप्टर पे जाके जो है वो उसके साथ अगर इंटरफेयर करे, तो ऑल दीज कंडीशंस लीड टू इम्प्रॉपर या पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 and ultimately leading to megaloblastic anemia. This anemia, which is due to chronic atrophic gastritis or autoimmune gastritis and it's leading to macrocytic anemia, is termed as pernicious anemia. बाकी सारे एनीमियाज जो है इसमें वो megaloblastic anemia ही होंगे. Like other causes हो सकते हैं कि maybe in the elderly individuals जहाँ पे B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रिलेटिव ज़्यादा हो जाती है कि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, या अगर गैस्ट्रेक्टमी का पेशेंट है, गैस्ट्रेक्टमी का पेशेंट से क्या होता है कि उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की रिलीज अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली जो आपके विटामिन B12 उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी. पेशेंट ऑफ द इलियल डिसेक्शन या टेपवर्म इन्फेस्टेशंस, ये वो कंडीशन है कि जहाँ पे किसी न किसी तरह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को साथ ही अफेक्टेड है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रिलेटिव हो जाए कि इंक्रीज डिमांड हो जाए, एज इन केसेस ऑफ द प्रेगनेंसी या हाइपरथायराइडिज्म. तो beside autoimmune gastritis we have some other causes of the macrocytic anemia as well. अगर macrocytic anemia की cause is the autoimmune gastritis, उसको हम कहेंगे pernicious anemia. अगर इसके अलावा किसी और कॉज से हो रहा है तो then it will be simply macrocytic anemia या megaloblastic anemia. ठीक है, तो this is all the thing regarding macrocytic anemia. आयरन की डेफिशिएंसी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी एप्लास्टिक एनीमिया की बात करूँगा, फिर आज का हम सेशन ये एंड अप करते हैं. एंड आई वुड लाइक के उससे इसके पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं. वो ये कि नंबर 1, अटेंडेंस से जो लोग कंसर्न हैं उन सब तक ही मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि जो गूगल क्लासरूम पे आ जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा गूगल क्लासरूम को हमारी, वो स्टूडेंट विल बी मार्क प्रेजेंट इन ऑल द सेशंस. नंबर 1. नंबर 2, प्रोसीजर ये होगा, मेरी कोशिश ये है कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूं गूगल क्लासरूम पे, ताकि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो तो हैं, इसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पे इसको देख लें. एंड थर्डली, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस हवाले से, वो दे आर ऑलवेज वेलकम. उसको आप गूगल क्लासरूम में ही कमेंट करके कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और उनके आंसर भी कर सकते हैं. वहाँ पे जो भी इश्यूज होंगे इस रिलेटेड वो डिस्कस हो जाएंगे. तो अभी ये हमारा एक तरह का प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट है. इंशाल्लाह कल या परसों तक आई ट्राई माई बेस्ट के जो एक प्रॉपर शेड्यूल है वो भी गूगल क्लासरूम पे ही मैं ऐड कर दूंगा, ताकि
फिर ये रोज रोज का ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें क्लास किस वक्त लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है। एक कंडीशन हमारे पास आ जाती है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इज बेसिकली एसोसिएटेड विद लैक ऑफ फंक्शनिंग बोन मैरो, एप्लेसिया ऑफ द बोन मैरो यानी लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बोन मैरो। ए रेफर्स टू ए मींस नॉट या एब्सेंट, प्लेसिया इज रेफर टू फंक्शंस, ग्रोथ। तो जब बोन मैरो ही काम नहीं कर रहा है तो ये एप्लास्टिक, जाहिर बात है हेमेटोपोइसिस भी अफेक्टेड होगी, सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस नहीं बल्कि ग्रैन्युलोपोइसिस भी। एप्लेजिया लेबल करने के लिए हमें जरूरी है कि 3 सेल्स हैं बेसिकली जो बोन मैरो से निकल रहे हैं ना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आउट ऑफ दीज 3 सेल्स कोई से 2 पैरामीटर्स, कोई से 2 सेल्स शुड बी लेस देन नॉर्मल इन द शुड बी लेस इन द रेफरेंस रेंजेस। अगर 2 पैरामीटर भी कम है, लाइक किसी में डब्ल्यूबीसीज भी कम है, आरबीसीज भी कम है, तो हम कह देंगे कि दिस इज एप्लास्टिक एनीमिया। एटलीस्ट या आरबीसीज कम है और प्लेटलेट्स कम है तो एप्लास्टिक एनीमिया, या इवन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम है तो दिस विल बी बोन मैरो एप्लेजिया। एप्लेजिया लेबल करने के लिए 3 में से हमें कोई से 2 क्राइटेरिया को कम होना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ हमने लिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं एप्लास्टिक एनीमिया की। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो बनेंगे सेल्स वो तो नॉर्मल बनेंगे, यानी वो माइक्रोसिटिक नहीं होंगे, वो माइक्रोसिटिक नहीं होंगे, वो नॉर्मोसिटिक होंगे, नॉर्मोक्रोमिक होंगे, नॉर्मोसिटिक होंगे, लेकिन उसमें हेमोग्लोबिन भी होगी। ओवरऑल जो नंबर ऑफ आरबीसीज है वो भी कम होगा। तो इसमें हो सकता है कि हमारी हेमोग्लोबिन नॉर्मल हो, एमसीएच नॉर्मल हो, एमसीएचसी नॉर्मल हो, एमसीवी नॉर्मल हो, लेकिन पीसीवी कम होगा, नंबर ऑफ आरबीसीज कम होंगे, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज और नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ये भी कम होंगे। तो ये एप्लास्टिक एनीमिया इज डायग्नोज्ड मोर ऑन दी सीबीसी पैरामीटर रादर देन दी पेरिफेरल ब्लड फिल्म। बोन मैरो के ऊपर इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज जो है प्लास्टिक एनीमिया की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्रॉनिक प्राइमरी हिमेटोपोएटिक फेलियर। नेम इंडिकेट्स प्राइमरी यहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे ये होता है कि इडियोपैथिक बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मैरो इटसेल्फ। तो कोई हिमेटोपोएटिक फेलियर है प्राइमरी टाइप का, बोन मैरो ही में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो कोई क्रॉनिक डिजीज है इन्फिल्ट्रेटिव या कोई रिग्रेसिव या माइलोफाइब्रोसिस टाइप की, कि जो बेसिकली लीड कर रही है कि बोन मैरो ही का फेलियर होता चला जा रहा है। यूजुअली देयर इज पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया यानी तीनों लीनिएज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया एंड एनीमिया, ये 3 फीचर्स आपको मिलेंगे। मोस्ट केसेस फॉलो सम सेकेंडरी कॉज। कुछ कंडीशन में आपको भी सेकेंडरी कॉज मिल जाती है, और ये सेकेंडरी कॉज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉमन और ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉजेज होती है। लाइक एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड ड्रग्स। कुछ केमिकल्स हैं या ड्रग्स हैं जो लीड करते हैं कि बोन मैरो फेलियर हो जाए। नाम सुना होगा हमने, बहुत सारी बोन मैरो सप्रेसिव ड्रग्स होती हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल्स हैं, कुछ स्टेरॉइड। आई थिंक फॉर द लास्ट टाइम वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अब जो है हमारा ये सेशन इज अबाउट टू फिनिश। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आई ट्राई टू मैनेज समथिंग विद दिस इंटरनेट कनेक्शन। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि सेकेंडरी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं प्लास्टिक एनीमिया की। प्राइमरी कॉज तो यही होगी ना, क्रॉनिक प्राइमरी हिमेटोपोएटिक फेलियर, बट सेकेंडरी कॉजेज लाइक एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड ड्रग्स जो बेसिकली बोन मैरो सप्रेशन कर रही होती है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं आजकल बड़े कॉमन है, बिसाइड कोरोना वायरस, मतलब सब कुछ कोरोना ही नहीं कर रहा होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक साइटोमेगालोवायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, हर्पीज ज़ूस्टर है, या डिफरेंट आर्थ्रोपोड बोर्न वायरसेस हैं। खासतौर पे हमारे सेटिंग्स में अब तो खैर कोरोना ज़्यादा आ गया, लेकिन इससे पहले हम वी वर स्टिल वी हैड अ फाइट विद दिस, क्या नाम था इसका, जो वायरल डिजीज बड़ी हमारे यहाँ चली थी, मॉस्किटो से हुई थी, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस जो हैं, डेंगी फीवर, वो हेमरेजिक फीवर इंड्यूस कर रहा था, तो वो भी बोन मैरो की सप्रेशन कर रहा होता है। देन इरेडिएशन, आपने शायद बहुत सुना होगा इरेडिएशन के बारे में, कि वो जापान में जब खासतौर पर एटम बम गिराया था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये सिचुएशन हो गई थी। इवन नाउ अ डेज हमारे पास जो रेडियोथेरेपी जो दे रहे होते हैं, इससे भी इवन ये हो सकता है कि बोन मैरो जो है वो सप्रेस हो जाए। कुछ इम्यून मेडिएटेड मैकेनिज्म्स हैं, कुछ इनहेरिटेड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो कॉमन है हमारे पास वो वायरल इन्फेक्शन है, ड्रग्स हैं और इरेडिएशन है। ये 3 ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉजेज हैं
कि जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, एंड बोन मैरो सप्रेशन विल लीड टू एप्लास्टिक एनीमिया. So lastly, thank you very much for all of you who have joined this meeting and this session, which was interrupted a couple of times by the unstable internet connection. Inshallah, I'll try my best कि next time ऐसा नहीं होगा. I'll try to have a stable internet connection. You know, right now I'm in the college, अपना Frontier Medical Dental College में अपने रूम में बैठ के मैं आपसे ये एड्रेस कर रहा हूँ. Next time I'll try to change my location क्योंकि यहाँ पे शायद signals का कुछ issue है, signal सही से नहीं आ रहा है. And lastly, I would like to tell all of you कि जो students हमारे पास अभी Google Classroom में हैं, उनकी attendance लग जाएगी. इस सेशन में होना जो है वो कंपलसरी नहीं है आप सब लोगों का, ये एक ऑप्शनल है. तो जो आता है मोर देन वेलकम, जो नहीं आता वो भी कोई बात नहीं. वो कोशिश ये होगी कि ये वाली जो वीडियो है हमारी अपलोड हो जाए गूगल क्लासरूम पे, ताकि उसमें जो है वो वहाँ से सब लोग उसको देख लें और वहीं पे कमेंट्स कर दें, जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे पूछ लें. ज़्यादा एक्टिविटी हमारी इसके हवाले से होगी इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज. प्रोबेबली आज या कल मैं टाइम टेबल पूरा उसका बना के फिर आप लोगों को गूगल क्लासरूम भी सेंड कर दूंगा, ताकि हम सब लोगों को पहले से पता हो कि हमारी क्लास कब हो रही है, कैसे हो रही है, किस वक्त हो रही है. And for all of your comments and suggestions, queries, lecture के हवाले से या journally जिस तरह जो भी हो इस कॉन्टेक्स्ट में ई-लर्निंग के हवाले से हमारी जो है वो सब के सब आप लोग जो हैं वो गूगल क्लासरूम पे काइंडली इसको आप बता सकते हैं और ज़रूर बताइएगा मुझे. इंशाल्लाह विल सी यू अगेन. थैंक यू ऑल. Thank you. Okay, stop video. End meeting. Thank you very much. See you inshallah. Stay safe, stay home.